Hello, dear students. Welcome to the class today. So, we are carrying on with this chapter 4, climate. The topics that we have completed, the climatic changes, the weather changes, the changes in the phenomena that is there, extreme hot, extreme cold, winter season, summer season, winter season में some of the characteristic features that we have done. कुछ चीजें जो हमने करी for the winter season, it was Mahavat, the rains that are happening in the winters, Mahavat. Then summer season में important characteristics, we have studied about the important characteristics of the summer season. The rains that are happening in the summer season in the Bengal region, West Bengal region, Kal Baisakhi. Okay, you need to know about that also. So, Mahavat, we have discussed about Mahavat. We discussed about Lu. We also discussed about Kal Baisakhi. And along with Kal Baisakhi, we also studied one of the major features of the summer season. ये जाते जाते जो बारिश होती है, the rains that are occurring while it's retreating, while it's going back. ठीक है, तो one concept that was there was mango showers. इंडिया का मैप जब हमने बनाया, when we had made India map, अभी क्या है climate chapter समझने के लिए तो every time you need to know about the map. Okay. Every time I make a very rough kind of a map, but then to understand it, you need to know all this. This is the TOC. Yeah. You know it very well, Tropic of Cancer. Now what happens here is the rains that are coming, okay? The environment that is created, low pressure conditions are already there in the northern India because of the summer season. इस area में extreme heat, because of the extreme heat, what happens that the pressure area that is there, the pressure that develops is a very low pressure area. Then what happens is low pressure के वजह से क्या होता है that from this direction the westerly winds are coming and यहाँ से air flow हो रहा है because of the deflection, the winds come to this side, gets deflected. ठीक है, ये मैं इसलिए बना रही हूँ ना, फिर वो गंदा सा हो जाता है, फिर वो फिर से बनाना पड़ता है, but still I'll make it. And the first rains are witnessed in Karnataka and Kerala. Got it? Now what happens? Karnataka and Kerala में ये जो बारिश सबसे पहले southwest monsoon had come. Good rains are there in the southwest in the southwestern region. Southwest monsoon से क्या होता है? There is a complete change in the weather conditions. खूब अच्छी सी बारिश होती है. Good rains happen, good rains occur. And windward side, एक चीज समझना, please try to understand. There is a windward side and then there is a leeward side. ठीक है? Suppose mountains are there, ये mountains हैं, and these are the clouds that are coming. बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, बारिश हो रही है. So all the rains that are happening, it is happening in the windward side. जहां पे कि the clouds are hitting, where the clouds are hitting the mountains, windward side वो हो जाता है. And just opposite इसके इधर क्या होता है? This is the leeward side. Leeward side. Got it? Means here mountains तो नहीं है इधर, लेकिन बहुत सारे छोटे छोटे hills are there. There is a difference between a hill and a mountain. Mountain, its ranges are very high. Mountain बहुत ऊंचे होते हैं and hills are small hills are there. तो उससे जब ये बादल टकराते हैं तो one side there is heavy rains and
more than 250 centimeter, and Deccan Plateau completely is receiving lot of rains. Then these are moving towards the MP. ये यहाँ पे MP है, as you all know. वहां पे भी काफी बारिश होती है. Lot of places receive good kind of a rainfall. Other span of rainfall that is there, it is towards the northeastern region. ये यहाँ पे मौसिन राम है. आप मैप देख सकते हो. मौसिन राम, Assam in the Khasi Hills, rainfall decreases, and the rains that are coming, here, यहाँ से it is going, यहाँ पे Ganga plains are there because of the mountains. The rains that are coming here is getting deflected to this side, और ये पूरा गंगा प्लेन है. यहाँ पे बहुत सारी बारिश होती है. Lot of rains occur here on the Ganga plains. Now on the Ganga plains the rains are happening. Here also the rains are happening, but by the time the rains have reached here, तब तक क्या होता है कि मानसून की बारिश जो है वो कम हो जाती है. तो ईस्ट से वेस्ट के तरफ it is decreasing, and the least rainfall receiving areas are राजस्थान and गुजरात. ये राजस्थान है, ये गुजरात है. मैंने जो मैप बनाया ना उसमें आई हैव टेकन द कंप्लीट पाकिस्तान. पूरा पाकिस्तान को इंडिया में दिखा दिया है. It was just joking. It can't happen. But my map is showing कि Pakistan is in India. Okay. Anyways, now what happens? One question that is very frequently asked. कि heavy rains are there. खूब तेज बारिश हो रही है. Got it? Heavy rains are there. Heavy rains are occurring. इसके बीच में क्या होता है? कभी कभी sometimes it has wet and dry spells. एकदम से बारिश रुक जाती है. For some days, 4-5 days, or for few weeks there is rain. Then few weeks there are no rains at all. Okay. So it is called as the break in the rainfall. Okay. What is the phenomena that we are discussing? We are talking about break in the rainfall. Got it? Now what happens? कि monsoon rains are happening for few days at a time. कभी कभी कुछ दिनों के लिए बारिश हुई. These are sometimes rains are not happening. Rainless intervals are there. It is happening because it is related to the movement of monsoon trough. ये जो monsoon that is moving, this is while it is moving, while the monsoon airs are moving, at times लो प्रेशर हाई प्रेशर के बीच में लो प्रेशर आ जाता है, या टू लो प्रेशर के बीच में एक हाई प्रेशर आ जाता है. वहां पे फिर बारिश का फेनोमेना चेंज होने लगता है. द ट्रफ दैट इज क्रिएटेड, जैसे द ट्रफ मीन्स देखो बिटवीन द टू एरियाज, वन एरिया दैट इज सराउंडेड बाय डिफरेंट काइंड ऑफ एयर प्रेशर, इट्स कीप ऑन मूविंग नॉर्थवर्ड एंड साउथवर्ड. So this trough that is there, kabhi the airs that are moving, sometimes it moves to south, sometimes it moves to north, south and north. बारिश इधर हुई, इधर हुई, इधर हुई, इधर हुई. This way. So it is moving, the trough that is moving, the clouds that are moving, sometimes it moves towards the southern direction, sometimes it moves towards the northern direction. So what happens ki when the monsoon is there, monsoon troughs are there, it is lying over the plains. Rainfall is good in this part. जब plain region के ऊपर, when these trough is there, when this spell of rains are happening, so on the plain area for some time continuously rains are happening. Got it? इसके बाद क्या होता है, कभी कभी एक्सिस जो है ये दिस एरिया दैट इज देयर, द एक्सिस दैट इज देयर, इट शिफ्ट्स क्लोजर टू द हिमालयस. हिमालयस के पास, ये यहाँ पे हिमालयस है, तो समटाइम्स द मॉनसून दैट इज मूविंग, इट मूव्स ऑन द प्लेन एंड समटाइम्स इट शिफ्ट्स टुवर्ड्स द माउंटेन. ठीक है, ये यहाँ पे हिमालयस है.
We have the Himalayas here. So what happens? The monsoons that are moving, sometimes it goes this direction, sometimes it comes this direction. फिर इधर आ गए, फिर इधर चले गए. I'm talking of the rains. तो जब ये एक्सिस शिफ्ट होता है मॉनसून का, ये जो बादलों का जो मूवमेंट है, at times what happens, it keeps on shifting, it keeps on moving. So when it is shifting, when it is moving closer to the Himalayas, वहां पे there is longer dry spells in the plain, क्योंकि ये सारे बादल जो है वो हिमालयास की तरफ चले गए हैं. And then what happens कि हिमालय से हटके it is come to this direction. So this movement of monsoons that are there, it is moving from Himalayas to the plains. So rain is occurring in mountainous catchment areas of Himalayan river. काफी दिनों तक हिमालयास पे बारिश हो रही है. फिर क्या होता है, ग्रेजुअली एंड स्लोली दीज कम टुवर्ड्स द प्लेन रीजन. हिमालयास पे बारिश हुई, उसके बाद दीज मानसून विंड्स आर मूविंग टुवर्ड्स द प्लेन रीजन. तो दीज हेवी रेन्स दैट आर अकरिंग, कभी हिमालयास के ऊपर, कभी इधर हमारे प्लेन्स के ऊपर. वाराणसी, यू नो, उत्तर प्रदेश रीजन इज इन प्लेन रीजन, एंड ठीक इसके ऊपर में हिमाचल एंड उत्तराखंड आर देयर. तो देयर इट इज हिली रीजन. So when the monsoon trough has moved towards the hilly region, then the plain area is not receiving proper rainfall. लेकिन the great rains that had happened in the mountainous region, mountains पे जो बारिश हुई है, झमाझम बारिश जो हुई है, it is causing devastating floods. गजब की बाढ़ आती है. Continuous rains that are happening ना, it is bringing devastating floods. And इसकी वजह से क्या होता है, damage to life, damage to property in the plains. Plain region में जो बाढ़ आती है, it is because of the longer spell of rains in the mountainous region. Got it? It shifts. And frequency, you know, of these floods काफी तेज होता है, काफी दिन तक ये बारिश होती रहती है. एंड इंटेंसिटी ऑफ ट्रॉपिकल डिप्रेशन, ट्रॉपिकल एरियाज का ये जो डिप्रेशन है, इसकी वजह से क्या होता है, अमाउंट एंड ड्यूरेशन ऑफ मॉनसून रेन्स. मॉनसून रेन्स आर देयर फॉर अ वेरी लॉन्गर टाइम, काफी दिन तक इट इज देयर, एंड समटाइम्स इट इज स्टॉप्स. तो अराउंड बे ऑफ बंगाल, ये जो बे ऑफ बंगाल है, द डिप्रेशंस आर फॉर्मिंग एट द हेड ऑफ द बे ऑफ बंगाल. यहाँ पे बिल्कुल ये मुंह पे बे ऑफ बंगाल के ठीक ऊपर में, एंड फ्रॉम हियर these areas are crossing over the mainland. This depression that is there, it is following the axis of the monsoon. किस तरफ है, north. Axis is always shifting from north to south. तो wherever there is the low pressure, वहां पे बारिश होने लगती है. So monsoon is known for its uncertainty. This is the question that is asked, that monsoons are known for its uncertainty. कब बारिश होगी, कहां बारिश होगी, this is very uncertain. ठीक से पता नहीं होता है. And the alternation that is there, dry है, कभी wet है, कभी बहुत बारिश हो रही है, कभी कम बारिश हो रही है. It is a varying in intensity, frequency, duration. Okay, you need to remember it. देखो, because we are understanding the weather phenomena in Indian region, अलग अलग जगह पे अलग अलग फेनोमेना काम कर रहा है. सेम मैकेनिज्म विल नॉट बी वर्किंग. यही ज्योग्राफी जो है, अगर आप अमेरिका में पढ़ेंगे या फिर अफ्रीका में पढ़ेंगे या फिर यूरोप में पढ़ेंगे, देयर यू विल अंडरस्टैंड अनदर ज्योग्राफी. गॉट इट? राइट नाउ दिस इज ओनली द मैकेनिज्म दैट इज वर्किंग इन इंडिया. ओके, सो ये याद रखना है दैट मॉनसून इज known for uncertainties. कब कहां कितनी बारिश होगी, we don't know that.
and there is dry and wet spells. कभी बहुत ड्राई हो गया है, there is dry and wet spells. मतलब कभी बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, कभी बहुत कम बारिश हो रही है. That is the dry and wet spells. It vary in intensity, frequency, duration. कितने दिन तक बारिश होगी, कहां पे बारिश होगी, उस बारिश का क्या रिजल्ट आएगा. So that is what is determining intensity, frequency and duration. Intensity, frequency and duration. कितने दिन तक बारिश होगी लगातार, how many days, that is not decided. So heavy floods are there in one. एक तरफ तो बहुत ज्यादा बाढ़ आ जाती है. There are heavy floods in one part and drought in the other. यहाँ पे you have to understand the concept of the windward side and the leeward side also. एक windward side and leeward side का जो concept हम लोगों ने देखा है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, that also you need to understand कि sometimes farming schedule is also disturbed. Heavy rains are there. पूरा का पूरा खेत पानी से पटा है, उसमें खेती कैसे होगी? How will the rains occur? फिर the farmers they go and they make एक मेड़ बनाते हैं जहां से कि बारिश का पानी पूरा बाहर जाएगा. And that is how then they get the fields which is ready for sowing the seeds. जो कि आपके बीज डालने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं, वो फील्ड्स, उन पे वो बीज पड़ती है. So when the monsoons will come, arrival and retreat of monsoon is uncertain. Arrival and retreat of monsoon is uncertain. Got it? कब बारिश आएगी, कब चली जाएगी. So sometimes because of this the farming schedule is disturbed. And the Indian farmers, Indian agriculturalists, all the Indian economic system of the rural areas are dependent on this monsoon. All the phenomena, all the mechanism that is happening is dependent on this phenomena. इसी के ऊपर सारा कुछ depend है. Economy also gets disturbed, na? The monsoon rains that are there, it is responsible for the livelihood of many people. So because of this livelihood getting disturbed, the complete schedule is getting disturbed. Got it? So this was about the advancing monsoons. Now we start the next topic, which is called as the monsoon. आ गए भाई, बारिश हो गई. अब क्या हो रहा है? ये मॉनसून बारिश करके वापस जा रहे हैं. All the monsoon that had come, now it is going back, and by going back, it is giving us the retreating season. Monsoons are retreating. वापस जा रहे हैं. Started in June, first week of June. July, August. September, आधा, half नहीं, first week of September. And where that also very rare. हमेशा नहीं होता है, कभी कभी ऐसा होता है. तो this is how the rains are occurring, changes are happening, and the lives of the people are attached to it. बहुत सारे लोगों की जिंदगी जुड़ी होती है इससे. So अक्टूबर नवंबर में apparent movement. अब क्या होता है? अक्टूबर नवंबर सन मूव्स. पहले क्या होता था ना, जिधर मेरा नॉर्थ डायरेक्शन है, आई हैव गॉट अ बालकनी. तो बालकनी में ऑल द सन रेज यूज्ड टू कम फ्रॉम द नॉर्दर्न डायरेक्शन.
Right now I am seeing कि December आ गया है, the whole of the heat and whole of the sun rays had shifted to south. आज तो today I was sitting outside, तो I thought कि ये कैसा है, how come it has happened? तो then I remembered the geographical factor. Then I understood the geography, the science that is working behind it. Are you getting? So sun moves towards the south in the October-November. Sun moves towards south. ये साउथ के तरफ सन का मूवमेंट हो गया. And the monsoon trough that is there or the low pressure trough over the northern plain becomes weak. Okay? Low pressure. Till now extreme heat was there, so there was low pressure. So low pressure trough over the northern plains are becoming weaker. Low pressure trough now becomes weak. बहुत कमजोर पड़ जाता है by this time. And इसके बाद gradual shift towards the high pressure system. अभी क्या है, high pressure है ना, ठंड कितनी बढ़ गई है. Look at the atmosphere, clear sky is vanished. सुबह सुबह के टाइम में देखो foggy होने लग गया है. Okay, so low pressure is taken over by high pressure. Got it? Weather change हो गया है. Southwest monsoon winds weaken and start withdrawing gradually. जितना all the monsoon winds which had come from the southwest, वो मैंने एरो बताया था, वहां से वो काफी कमजोर पड़ जाता है, वहां पे वो हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं and it starts withdrawing, वापस आने लगते हैं. And by the beginning of October, the monsoon withdraws from the northern plain. पूरा जो north region है, all the northern region that is there, monsoon withdraws from here. ठीक है? It comes low. High pressure हो गया ना, high pressure से high pressure में तो the monsoon winds could not stay. It looks towards the low pressure. And October-November month is very harmful. I mean very dangerous. Harmful क्या कहेंगे, dangerous है. कब सर्दी हो जाएगी, कब बारिश हो जाएगी, कब आपको सर दर्द होने लगेगा, and when the weather conditions will improve, when the weather conditions will change, you never know. अचानक ठंडी हो जाती है, अचानक बारिश होने लगती है, अचानक से हल्की सी गर्मी लगने लगती है. You know, so this kind of a weather is really troublesome. हार्मफुल तो नहीं कहूंगी, लेकिन ट्रबलसम है, आपको सारी चीजें क्लियरली पता नहीं होती है. Monsoon is withdrawing from the northern plains and October-November period is called as the transition period. So October and November period is transition period. बारिश के बाद हल्की हल्की ठंडी आने लग गई. And please, इसको बहुत ज्यादा you don't need to go in the technical or theoretical form. Think it from the theory में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं, practically देखो ना. You are really lucky that while we are doing this climate chapter, and you can witness the changes that are happening. Retreat of monsoon is there, clear skies are there, and rise in temperature. डे टेम्परेचर्स तो बढ़ा रहता है, काफी बढ़ा हुआ रहता है, क्योंकि द सन दैट इज देयर, सन रेज दैट आर देयर आर क्वाइट हाई, काफी तेज हार्श सन रेज आर देयर, एंड डे टेम्परेचर्स आर हाई, नाइट आर कूल एंड प्लीजेंट. लैंड क्या होता है, अभी स्टिल इट्स मॉइस्चर भरा हुआ है इस लैंड में, तो high temperature is there and humidity is there. Weather becomes oppressive during the day.
डे टाइम में तो हीट इज रियली हाई. अभी तो बाप रे बाप, इन द मंथ ऑफ अक्टूबर इट वॉज एक्सट्रीमली हीटेड. एंड दिस इज वॉट हैड हैपेंड कि यू डोंट रियलाइज, और इतनी प्यास लग रही थी. तो इट इज कॉल्ड एज द रिट्रीटिंग हीट. ओके, सो days are warm and nights are cold. ठीक है. एंड मतलब कि एक्सट्रीम, बिकॉज द डेज आर क्वाइट वार्म एंड क्वाइट ऑप्रेसिव, काफी तेज गर्मी रहती है. सो इट इज कॉल्ड एज, अक्टूबर के महीने में ही ये होता है, इट इज कॉल्ड एज October heat. Got it? The kind of heat that you witness in the month of October. अभी लो प्रेशर कंडीशंस आर देयर. नॉर्थ वेस्ट में तो अभी भी लो प्रेशर है. नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में द लो प्रेशर एरिया हैज डेवलप्ड एंड बे ऑफ बंगाल में इट इज ट्रांसफरिंग इन द अर्ली नवंबर के शुरू में क्या होगा, इट विल बी ट्रांसफरिंग टू दी बे ऑफ बंगाल. एंड अब क्या होगा, अभी आप देखो साइक्लोन आया, बुरेवी वॉज देयर, साइक्लोनिक डिप्रेशन वुड बी देयर, जो कि अंडमान सी के ऊपर इट इज ओरिजिनेटिंग. अंडमान सी इज हियर, यहाँ पे ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आते हैं ना, छोटे छोटे आइलैंड्स. हियर लो प्रेशर एरिया दैट हैज डेवलप्ड. साइक्लोन्स आर क्रॉसिंग द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया. ईस्टर्न कोस्ट से क्रॉस करके इट इज कमिंग टुवर्ड्स इंडिया. हेवी एंड वाइड स्प्रेड रेन्स आर देयर. ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ये जो होते हैं बहुत डिस्ट्रक्टिव होते हैं. तमिलनाडु तो बच गया बिकॉज द साइक्लोन, वो डिप्रेशन का फेज जो है वो थोड़ा कम हो गया है. सो ये गोदावरी, डेल्टा ऑफ गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, अक्सर यहाँ पे आंधी तूफान आते रहते हैं एंड ग्रेट डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी. द गवर्नमेंट फेसेस लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स इन द कोस्ट ऑफ उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश. तो दिस is the bulk of rainfall is happening in the Coromandel coast because of the depressions and cyclones. The depression that is caused because of the weather here is bringing big cyclones. ठीक है, high pressure moving towards the low pressure area and एक trough create हो रहा है जिसके वजह से कि frequent cyclones are there in this region. Got it, children? So this is also called as retreating monsoons. We also call it as post monsoon, मतलब monsoon के बाद का phase. And this is also called as the transition season. बिल्कुल गर्मी से एकदम से ठंडी की तरफ बढ़ जाते हैं, तो a phase of transition is there. Got it, children? 2-3 points I'll make you mark in the book. Come on, let's see. So students, just now we have discussed about the rainy season, about the advancing monsoons. We have talked about Mausan Ram as the place receiving highest rainfall. This is what I wanted you to remember. GK point of view, it's important. That's why I just wanted that you should know about it. Another phenomenon, देखो एक चीज़ जो हमने बात की कि why is there rains intervals in the rains, रुक रुक के बारिश क्यों होती है. This is what we had discussed. So here we have to explain that ये जो रुक रुक के बारिश होती है, it is because of the movement of monsoon trough. Sometimes the monsoon trough, here I will explain it with the help of the diagram. So the diagram that you are seeing, ये जो monsoons that are proceeding from here, got it? तो क्या होता है कि because of the hills here, sometimes the monsoon clouds gets to this side and sometimes moves to this side. So what happens, जब ये इधर जाते हैं तो इधर बारिश नहीं होती है, and when the monsoon rains moves this side, then this side is not receiving rainfall. The movement in north and south, to and fro movement
of the monsoon is causing break in the monsoon spells. Got it? There is break in the monsoon spells. Is it clear? तो इस phenomena को आपको समझना है that the trough sometimes it's moving to the north and sometimes it's moving to the south. तो ये नॉर्थ साउथ के तरफ जो शिफ्ट हो जाता है, द शिफ्ट इन द एक्सिस इज कॉजिंग दिस काइंड ऑफ अ रेनफॉल, ड्राई स्पेल्स. गॉट इट? सडनली बारिश होते होते जो कुछ दिनों के लिए बारिश रुक जाती है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द शिफ्ट इन द एक्सिस. ओके, थैंक यू चिल्ड्रन एंड ऑल द बेस्ट टू यू.